Hello everyone, CAT 2023 एक्चुअल कैट पेपर सॉल्यूशंस इस प्लेलिस्ट का एक वीडियो नंबर 6 है जिसमें हम स्लॉट 2 के क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 22 ये 7 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ज्योमेट्री से हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में से हैं एंड द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस जो है वो नंबर्स टॉपिक से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ ट्रायंगल इज ड्रॉन विथ इट्स वर्टाइसेस ऑन द सर्कल C such that one of its side is a diameter of C and the other 2 sides have length in a ratio is to B. So one of the side is a diameter, मतलब वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है? द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल is always 90 degree. So let's say this is a circle C, this is a diameter and ये जो है वो triangle ABC है। Let's have a look at it. And the angle inscribed in a semicircle is always 90 degree. This is triangle PQ and R such that PR is a diameter and the रिमेनिंग 2 साइड्स का जो रेशियो है वो A/B है। तो हम PQ को A इंटू K एज्यूम करते हैं एंड QR को B इंटू K एज्यूम कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज R, मीन्स द लेंथ ऑफ PR बिकम्स R प्लस R 2 टाइम्स R। देन वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ओवर हियर द बेस इज B इंटू K and the height is A into K. And along with this, what else we can conclude is AK bracket square plus BK bracket square. This addition is 2R bracket square. So over here, if we take K square common in a bracket, A square plus B square is remaining is equal to 4 times R square. So the value of K square becomes how much? 4 times R square divided by A square plus B square. अब ये जो K स्क्वायर का वैल्यू है वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ इंटू A इंटू B इंटू K स्क्वायर। K स्क्वायर बिकम्स 4 टाइम्स R स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 2 टाइम्स R स्क्वायर इंटू AB डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो दिस इज ऑप्शन नंबर B। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB इज इक्वल टू 9, BC इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ रेक्टेंगल ABC and D. The length of AB is equal to 9, whereas the length of BC is equal to 6. P and Q, these are 2 points on BC such that the area of the figure ABP, APQ and AQCD are in geometric progression. So length of A, B and P. Look here. P and Q, these are 2 points on the side BC. So here it is point P and then here it is point Q. Let's have a look at it. The area of triangle ABP, the area of triangle APQ and the area of quadrilateral AQCD, they are in geometric progression. ABCD is a rectangle, that is why these all the angles, angle ABCD are 90 degree. And after that, the area of the figure AQCD is 4 times the area of triangle ABP. If the area of triangle ABP is X, then the area of quadrilateral AQCD becomes 4 into X. So now the area of these 3 regions is in geometric progression. So area of triangle ABP divided by area of triangle APQ is equal to area of triangle APQ divided by area of quadrilateral 4x. So from this what we can conclude is the area of triangle APQ is equal to how much? Square root of 4x square. That is equal to how much? 2x. Now we need to find the ratio of length of BP is to PQ is to QC. So over here the property is if 2 triangles are having same height, then
the ratio of their area is equal to ratio of their bases. So over here what we can conclude is the triangle ABP and the triangle APQ, these two triangles are having same height. So these two triangles are having same height, so the ratio of their area is nothing but the ratio of their bases. So the ratio of their bases BP is to PQ becomes how much? The ratio of their area, x is to 2x. So the ratio of BP is to PQ becomes 1 is to 2. So over here you can eliminate the options in which BP is to PQ, means the ratio of first two numbers is not 1 is to 2. So by using this logic we can eliminate option D over here. Now how to conclude the final answer over here? So what I will do here, I will join the line A and C. I will join the 2 points A and C. Now 4x is the area of complete quadrilateral. 4x is the area of complete quadrilateral. If I assume the area of this triangle is, let's say, y, the area of this triangle becomes how much? 4x minus y. AC is a diagonal, so from this what we can conclude is the diagonal divide rectangle into two equal areas. So I can conclude that the value of x plus 2x plus y is equal to 4x minus y. So the value of 2y is equal to x. So the value of y becomes how much? X divided by 2. So again by using same logic we can conclude that the area of, if two or more triangles are having same height, then the ratio of their area is equal to ratio of their bases. So over here what we can conclude is triangle ABP, then triangle APQ, and along with this the triangle AQC. These three triangles are having same height. So the ratio of their bases is going to be how much? The ratio of their bases is BP is to PQ is to QC. The ratio of their bases is going to be the same as the ratio of their areas. The ratio of area is x is to 2x is to y. The value of y is nothing but x divided by 2. Now multiply this ratio by 2, the ratio becomes 2 is to 4 is to 1. So answer of this question is option C. तो यहाँ पे जो AB का लेंथ 9 दिया गया है एंड द BC का लेंथ 6 दिया गया है, दैट डेटा इज इररिलेवेंट ओवर हियर. सो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, let AN and BN are the two sequences such that the value of AN is equal to 13 plus 6 times n minus 1 and the value of BN is equal to 15 plus 7 times n minus 1 for all natural numbers n. Then the largest 3-digit integer that is common to both sequences, the largest 3-digit number we need to find which is common to both sequences. तो पहले हम इन इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो वैल्यू ऑफ an becomes how much? 13 plus 6n minus 6. So the value of an is equal to 7 plus 6 times n. Similarly, the value of bn is equal to 15 plus 7 times n minus 7. So value of bn क्या हो जाता है? 15 minus 7 that is equal to 8 plus 7 times n. तो इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स है उन कॉमन टर्म्स में से लार्जेस्ट 3-digit इंटीजर कौन सा है, दैट वी नीड टू फाइंड. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. So let's say the xth term of this sequence, it's same as yth term of this sequence. The xth term of this sequence is 7 plus 6 times x and the yth term of this sequence is 8 plus 7 times y. तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते हैं. तो इक्वेशन क्या हो जाता है? 6x minus 7y is equal to 1.
तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर यूज करके फर्स्ट फ्यू सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, नो y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यस. अगर हम y इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 6x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. नाउ अब हाउ टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट सॉल्यूशन. सो x का वैल्यू जो है +7 करना होगा एंड y का जो वैल्यू है वो उसे +6 करना होगा. द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज 6 + 7 13, 5 + 6 11. द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज 13 + 7 20, 11 + 6 that is equal to 17 and so on. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए. तो बेसिकली इसका जो वैल्यू है दैट वैल्यू शुड बी अ 3 डिजिट नंबर. सो अगर आप इसे यहाँ पे चेक करोगे तो 7 इंटू वाई का वैल्यू 8 + 7 इंटू वाई का वैल्यू शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 999. तो 7y का वैल्यू शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 991. So y का वैल्यू शुड बी लेस दैन और इक्वल टू व्हाट, 7 into 1 is 7, the remainder is 2, 7 4s are 28, remainder is 1, 7 1s are 7 and so on. तो y का वैल्यू जो है वो 141 से लेस दैन और इक्वल होना चाहिए. तो लेट्स सॉल्व कर इट. तो यहाँ पे x एंड y का जनरल फॉर्म क्या होगा, लेट्स सॉल्व कर इट. तो 6 + 7 into k and 5 + 6 into k. तो अगर आप यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 रखोगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा, k इज इक्वल टू 1 रखोगे तो सेकंड सॉल्यूशन आएगा, k इज इक्वल टू 2 रखोगे तो थर्ड सॉल्यूशन आएगा. सो नाउ अब 5 + 6y का जो वैल्यू है वो लेस दैन और इक्वल टू 141 होना चाहिए. तो इट मीन्स 6 into k शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 141 - 5 करेंगे तो यहाँ पे 136 आएगा. इट मीन्स k का जो वैल्यू है दैट इज लेस दैन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 21. होल्ड ऑन, नॉट 21, 22 point something. So the maximum value that k can take is 22. So let's put k is equal to 22 over here. तो solution क्या होगा, 22 into 7. तो 22 into 7 is equal to 154 plus 6 is equal to 160. x का वैल्यू 160 होना चाहिए and the corresponding value of y क्या होगा, 5 + 6 into k. 22 into 6 132. 132 plus 5 is 137. तो हमें यहाँ पे x is equal to 160 पुट करो या फिर y is equal to 137 पुट करो, you will get our final answer. तो x is equal to 160 पुट करते हैं. 7 + 6 into 160 that is equal to 960 plus 7 967. ये जो है दिस इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो इन दोनों सीरीजेस में कॉमन है. 967 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो इन दोनों सीक्वेंसेस, दोनों सीरीजेस में कॉमन आएगा. दिस इज हाउ हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. Let both the series A1, A2, A3 and so on and B1, B2, B3 and so on be in a arithmetic progression such that common differences of both series are prime numbers. Hold on. तो first arithmetic progression है A1, A2, A3 and so on till AN. और यहाँ पे let's assume that कि D का value is equal to D1. Then second arithmetic progression है, first term is B1, second term is B2, third term is B3 and the last term is Bn. And इस arithmetic progression में let's say D का value D2 है, such that D1 and D2, these two numbers are which kind of numbers? They are prime numbers. ऐसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है. The common differences of both series are prime numbers. अब यहाँ पे आगे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं. फर्स्ट कंडीशन है कि A5 is equal to B9. Now A5 means fifth term of first AP is equal to A1 plus 4 into D1. Ninth term of second AP is equal to first term is B1 plus
8 टाइम्स 9 माइनस 1 8 टाइम्स d2। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, होल्ड ऑन 1 सेकेंड, देयर इज अ वन मोर कंडीशन यहाँ पे, a19 is equal to b19. So now 19th term of first AP is equal to a1 plus 18 times d1 and 19th term of second AP क्या होगा, b1 plus 18 times d2। तो now अब हम क्या करेंगे, let's call this equation as equation number 1, this equation as equation number 2। आप equation 2 में से equation 1 को subtract कर दो, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, a1 एंड a1 कैंसिल हो जाएगा, 18 टाइम्स d1 माइनस 4 टाइम्स d1 इज 14 टाइम्स d1, b1 एंड b1 कैंसिल हो जाएगा, 18 टाइम्स d2 माइनस 8 टाइम d2 इज इक्वल टू 10 टाइम d2। तो फ्रॉम दिस हमें क्या पता चलेगा कि d1 डिवाइडेड बाय d2 का जो रेशियो है वो 5 डिवाइडेड बाय 7 होना चाहिए। इट मीन्स d1 का वैल्यू 5, d2 का वैल्यू 7 और d1 का वैल्यू 10, d2 का वैल्यू 14 और d1 का वैल्यू 15 और d2 का वैल्यू 21 and so on. There are infinite possibilities are there, but which one is valid? Question says d1 and d2 they are prime numbers, तो d1 का वैल्यू 5 ही होना चाहिए, d2 का वैल्यू 7 ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि d1 का वैल्यू 5 होना चाहिए, d2 का वैल्यू 7 होना चाहिए। यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास और एक कंडीशन अवेलेबल है, b2 इज इक्वल टू 0। तो लेट्स हैव लुक एट इट, b2 इज इक्वल टू 0। तो b2 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लेट्स हैव लुक एट इट। b2 मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दैट इज इक्वल टू b1 प्लस d2 इज इक्वल टू b2 आना चाहिए। b2 इज इक्वल टू b1 प्लस d2 इज इक्वल टू b2 आना चाहिए, विच इज इक्वल टू 0। होल्ड ऑन, तो हमारे पास d2 का वैल्यू है, तो b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, b1 का वैल्यू माइनस d2 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, करेक्ट। अब हम b1 का वैल्यू -7 इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a1 प्लस 4 टाइम्स 5 20 इज इक्वल टू b1 प्लस 8 टाइम्स d2 56। सो a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट्स हैव लुक एट इट, 56 माइनस 7 49, 49 माइनस 20 29 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमें a11 का वैल्यू निकालना है। 11th term of first AP is equal to A1 plus 10 times D1. The value of A1 क्या है, 29 plus 10 times D1 का वैल्यू क्या है, 5. So 50 plus 29 that is equal to 79 is the answer of this question. Question number 20. The number of positive integers less than 50 having exactly two distinct factors other than 1 and itself is what? सो बेसिकली यहाँ पे हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो 50 से कम है एंड जिसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए, जिसके 2 फैक्टर्स होना चाहिए एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स हमें नंबर n चाहिए सच दैट n का वैल्यू लेस देन 50 तो होना ही चाहिए। अलॉन्ग विद दैट n के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने होने चाहिए, 2 + 2 4 होना चाहिए। 2 distinct factors and 1 and the number itself। तो आप इसे कंबाइन करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स n के हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट एवरी नेचुरल नंबर n हम कैसे लिख सकते हैं, a to the power p into b to the power q into c to the power r into so on, जहाँ पे a b c आर प्राइम नंबर्स। ओके, एंड यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने का। द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू p + 1 इंटू q + 1 इंटू r + 1 इंटू सो ऑन। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए 4। तो ये फॉर्मूला हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स
हमें चाहिए 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, या 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 × 2 मतलब क्या, 2 × 2 मतलब 1 + 1 × 1 + 1। तो यहाँ पे दो प्राइम फैक्टराइजेशंस पॉसिबल हैं। द फर्स्ट type of prime factorization is equal to a to the power 3, where a is prime number, and the second type of prime factorization is a to the power 1 into b to the power 1, where a and b are prime numbers and number n less than 50 होना चाहिए। a is a prime number, n is equal to a cube less than 50। ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है, n का वैल्यू यहाँ पे 2 क्यूब हो सकता है, दैट इज इक्वल टू 8। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल नंबर जिसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 होंगे। देन n इज इक्वल टू 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 इज द सेकेंड पॉसिबल नंबर। n इज इक्वल टू 4 क्यूब नहीं चलेगा बिकॉज 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। n इज इक्वल टू 5 क्यूब इज 125, वो चलेगा, बट वी वांट वैल्यू ऑफ n टू बी लेस दैन 50। So under the first case, there are only two numbers which are having exactly which are having exactly 4 factors. Now let's have a look at the second case. In the second case, we want numbers n in a form of a to the power 1 into b to the power 1, जहाँ पे a and b दोनों prime numbers है। Basically it is a product of two different prime numbers. In the second case, n क्या है, n जो है वो मल्टीप्लिकेशन है दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ n कैन बी 2 to the power 1 into 3 to the power 1, it can be 2 to the power 1 into 5 to the power 1, then 2 to the power 1 into 7 to the power 1. So these are all the numbers which are going to have exactly 4 factors. 2 to the power 1 into 11 to the power 1, similarly 2 into 13, then 2 into 17, then 2 into 19, then 2 into 23 is also possible. 2 into 29 is not possible because it is more than 50. Now after that, 3 into 5 is possible. 3 to the power 1 into 5 to the power 1, then 3 to the power 1 into 7 to the power 1, 3 to the power 1 into 11 to the power 1, 3 to the power 1 into 13 to the power 1. After that, 3 into 17 is not possible. Then 5 to the power 1 into 7 to the power 1, 5 to the power 1 into 11 to the power 1 is not possible. 7 to the power 1 into 11 to the power 1 is not possible. So these are the total numbers which are less than 50 satisfies the given condition. तो इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे there are two numbers which satisfies the given condition. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 numbers are there. तो फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 2 + 13 that is equal to 15. There are 15 such numbers less than 50 जिसके 2 distinct factors है other than 1 and itself, means जिसके total overall 4 factors हैं, ऐसे 15 नंबर से less than 50. Question number 21. Let a, b, m and n are the natural numbers such that a is greater than 1 and b is greater than 1. If a to the power m into b to the power n is equal to 144 to the power 145, then the largest possible value of n minus m is how much? So let's have a look at it. तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले तो हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 144 होता है 16 into 9, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 4 into 3 to the power 2. So 144 to the power 145 is going to be how much? 2 to the power 4 into 3 to the power 2 bracket to the power 145. So from this हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, a to the power m into b to the power n is equal to 2 to the power 4 into 145, that is equal to 580, into 3 to the power 2 into 145, that is equal to 290. So यहाँ पे हमें क्या करना है, n minus m का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम करना है। n minus m मैक्सिमम कब होगा, when n is maximum
when m is minimum. तो हम इसे यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स हाउ लुक एट इट. हमें n को मैक्सिमम करना है एंड m को हमें मिनिमम करना है. तो फर्स्ट थॉट ओवर हियर इज a टू द पावर m को वैल्यू दे देते हैं. 1 सेकेंड होल्ड ऑन, इससे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं. a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n. लेट्स राइट दिस एज b टू द पावर n इंटू a टू द पावर m. सो नाउ इस पर्टिकुलर केस में यू कैन सी दैट n का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 580 एंड m का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 290. So the value of n minus m is equal to how much? 580 minus 290, that is equal to 290. So in this case n and m का जो difference है वो 290 है. हमें maximum possible value of n minus m निकालना है. One of the option you can see 290 is over here. So now let's think how we can increase this difference. How the difference n minus m can be more than 290. Let's think from that point of view. So over here we should concentrate on n and m. We want n to be maximum and at the same time we want m to be minimum. So let's concentrate on this. We want m to be minimum. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? m का वैल्यू 1. How we can make the value of m to be 1? Let's have a look at it. तो a का वैल्यू हम लिखते हैं 3 to the power 290. The value of a over here we are assuming the value of a to be 3 to the power 290. And the bracket to the power 1, it means the value of m becomes 1 and value of b is 2 as it is. The value of b is 2 and the value of n becomes 580, that is 2 to the power 580 into 3 to the power 290 bracket to the power 1. This bracket is nothing but a. Over here this 2 is nothing but b. This 580 is equal to n and m is equal to 1. This is 1, this is m. So in this case you will get the value of n minus m to be 579 and this is our final answer. The maximum value that n minus m can take is 579. So option number D is the answer of this question number 21. Question number 22. For any natural number m, n and k such that k divides both m plus n and 3m plus 4n, k must be a common divisor of what? तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है लेट्स अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स टेक अ नंबर 4. आई कैन सी दैट 4 इज अ फैक्टर. 4 is a factor of 24. If 4 is a factor of 24, then it is a factor of 24 into 248, 24 into 372, 24 into 496 and so on. Along with this, I can also say that 4 is a factor of, let's say, 16. So 4 is a factor of 16 into 232, 16 into 348, 16 into 464 and so on. And the one more concept over here is the multiple of 4. If you subtract multiple of 4 and multiple of 4, the difference is also going to be multiple of 4. The difference is also going to be multiple of 4. For example, you can see that 48 is a multiple of 4. 32 is a multiple of 4. The difference is how much? The difference is 16 is also a multiple of 4. So now let's read the question again. क्वेश्चन में क्या लिखा है? k divides m plus 2n completely. It means k is a factor. K is a factor of m plus 2n. Then k is a factor of 2 times m plus 2n, that is 2m plus 4n. Then k is also a factor of 3 times m plus 2n, that is 3 times m plus 6n, and so on. Now after that, it is given that k divides 3m plus 4n, so we can say that k is a factor. K is a factor of 3m plus 4n, and so on. So now look here. So over here we can say that 2m plus 4n
or hold on, 3m plus 4n is a factor, is a multiple of k. 3m plus 4n is a multiple of k. 2m plus 4n is also a multiple of k. So this subtraction is also going to be a multiple of k. This subtraction is going to be how much? This subtraction is going to be m. M is also going to be multiple of k. Similarly, we can say this number is a multiple of k. 3m plus 6n, this number is a multiple of k. Then 3m plus 4n, this number is also a multiple of k. So this difference is how much? This difference is 2n. 2n is also going to be multiple of k. So over here you can see that m and 2n, both of them are going to be multiple of k, means k is a common factor of both of these two numbers m and 2n. This is how हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर सकते हैं.